Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is Shashank Tyagi and today we are going to discuss PSIR Optional Paper 2 2021 which was held on 16th January 2022. Purpose of this video is to make you understand the demand of questions which were asked this year. Paper 2 was on general side. When I say general, it should not be confused with being simple. It means if you have gone through the syllabus, was having eye to the current developments, you will have enough words to answer this. आप किससे भी पूछिए how was paper 2, those who have attempted this year, they would say कि sir काफी लिख कर आए हैं. But still, what is going to be the differentiating factor? How you structure your answers and how you can structure your answers. Structure कैसे करेंगे when you understand the demand, right? So there's a connection between the two. So आज हमारा पर्पस होगा डिमांड, ठीक है, राइट. So let's start. So paper 1 section A, topic number 1 in your syllabus is comparative politics, nature and major approaches. UPSC has asked question on nature earlier also, changing nature of comparative politics. And this year, major approaches, UPSC has asked one approach, political economy approach. I would advise all of you that syllabus should not be printed in your mind like what are the keywords. The next level of your understanding of the syllabus is you also know what are the major question themes which are asked from this particular topic. Okay, so now let's start. Question is, discuss the political economy approach to comparative analysis of politics. This is a direct question, I would say, but please keep in mind you have to differentiate your answer. For that, you can have a technique in your mind that in paper 2 section A, major portion is theory. So it means even if a question seems to be directly from a keyword in your syllabus, you should make efforts to give it dimensions of theory. For example, in political economy, it is quite easy that you know that liberal approach, Marxist approach, right? You are going to answer that. But you can have this thing in mind that theory, scholars, and contemporary. These should be key masala of your answer. For example, in contemporary scenario, since it is asking discuss political economy approach to comparative analysis of politics, तो क्या आप कोई contemporary example देकर इसके relevance को और ज़्यादा solidify कर सकते हैं? Yes, especially in this COVID era and how we are analyzing post-COVID world order, different ideas are coming in. We have ideas related to political economy approach. For example, creative theory is in news. For example, using political economy approach, resetting capitalism is coming on the surface. तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके रेगुलर नोट्स में है वो तो करना ही है, बट contemporary आप example दे देंगे in the last part, in the conclusion side, so it will enrich your answer, right? Second is, political parties and pressure groups are sine qua non of democracy comment. Sine qua non. So question directive is comment. So it means this question is asking whether, means you should think like this, how political parties and groups are sine qua non of democracy. It means synonymous. यानी कि डेमोक्रेसी को आप पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बिना नहीं सोच सकते. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव रेड द क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं. अगर नहीं देखा है, वी आर गोइंग थ्रू इट. लेकिन अगर आपने जब पढ़ा होगा क्वेश्चन पेपर, सो सम स्टूडेंट्स माइट बी इलेटेड बाय थिंकिंग, ओ पॉलिटिकल पार्टीज ये तो हमारे नोट्स में है, प्रेशर ग्रुप्स यस वी हैव कवर्ड दिस इन आवर नोट्स. लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे what are political parties, what are pressure groups? ऐसा तो नहीं पूछा. Sine qua non. This is the link word. So my advice would be कि जो एक जनरल अप्रोच होती है कि नोट्स वाले कंटेंट को एग्जैक्टली पोर्ट्रे करने की कोशिश किया जाती है. अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज, ओ व्हाट वी नो डिवर्जर, वी नो कनेक्शन बिटवीन इलेक्शन सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम, FTPT एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम. वो डिमांड नहीं है. उसको ज़बरदस्ती लिंक करने की कोशिश मत कीजिएगा कि नॉर्मेटिव बिहेवियरल
व्यूज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं, ये डिमांड थोड़ी ना है. दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू ऑल्सो टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल एनोमिक, नहीं नहीं. क्वेश्चन साइन क्वा नॉन इस पर फोकस्ड है. सो डेमोक्रेसी, तो क्या आपको नहीं लगता यू शुड यूज द कीवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, पहले उस टेक्निक से चलिए, थ्योरी. सो पॉलिटिकल पार्टीज का होना कौन सी थ्योरी का आउटकम आपको लगता है? आई होप यू वुड एग्री, liberal theory. You will also agree with the pluralist view that power is actually dispersed. For example, we have used the word, UPSC has used the word pressure group. I hope you remember Robert Dahl. तो यानी कि अगर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इफ इवेल्युएटर सी कि हाँ आप इसका थ्योरेटिकल लिंकेज जानते हैं, सो इट गिव्स some brownie points to you. उसके बाद what some keywords, some scholars: political socialization, political capability, political recruitment, interest aggregation, interest articulation. Please note these words down. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ये कनेक्ट करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी और इसका कनेक्शन है. समझ में आ रहा है आपको? सो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर, दिस शुड बी इन योर स्ट्रक्चर, राइट? सो आई होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट है, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कमेंट. अनदर स्टेटमेंट. सो यू हैव दिस अप्रोचेस ऑफ टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी, और उसमें आपने मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन इज ऑन एनालिटिकल साइड. सो सबसे पहले तो एक आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा क्या ऐसा है या नहीं है. सो सम ऑफ यू माइट से यस, सो यू शुड हैव सम कीवर्ड्स इन योर माइंड. व्हाई यू आर सेइंग यस? You must be having some keywords like globalization, integration, right? Interdependence. And those who are saying no, you also have some rational points. What rational points do you have? Uneven exchange of resources, development of underdevelopment, Emmanuel Wallstein, dependency theory. अब इस आंसर में आपको दोनों का फ्यूजन करना है. There are two ways to approach, although purpose of this video is not to get into the detail of answer writing, because we have to understand the demand of questions, right? And after that you can mention in the comments the tricky questions you know in which you find that you're struggling to get the exact approach on the paper. So you will have video on that particular answer in detail. We'll have a 15 minutes discussion on this particular answer. You can mention in comments. But question के डिमांड को समझना इस वीडियो का पर्पस है, वो आई होप यू विल गेट इट. तो ऐसे में यस और नो दोनों कंपोनेंट को हमें रखना है, ठीक है. एक तरीका है कि आप स्टार्ट करें नो से, कि व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट theoretical points you have to say नहीं, ऐसा नहीं है कि relevance has lost. And then you mention some points on yes, and then in the last conclusion side you can have some contemporary connection, right? Because we know for example in this COVID time, vaccine nationalism, right? We have seen that rich nations gave themselves priority, and some of the nations have booked three times the vaccines they were needing at that particular time. So हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ से ये पता लगता है कि there is this uneven exchange, right? This economic phenomena is actually shaping the world, right? The base superstructure model है, it is a reality. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंटेम्प्रेरी कनेक्ट ऐसे नहीं है कि वो कुछ यू हैव टू पुट अ पिच वर्क, राइट? वो जब भी कोई करंट डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको उसको कनेक्ट ही इस तरीके से करना है कि मेरे सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है, सब टॉपिक पे दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चन थीम्स, क्योंकि वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करे हुए हैं, नहीं करे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वी आर डूइंग इट, एंड इन कमिंग वीडियोज ऑल्सो यू विल हैव एनफ अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. तो उसके मतलब ये कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको ये कनेक्ट करना है. तो कंक्लूजन में यू कैन स्टैंड ऑन द नो साइड, right, by saying that these are the examples which show that yes, economic factor, right, and this dependency theory
neocolonialism, right? It is very much visible, right? So I would say this question was also direct, but structure पे बात है, आपके को कितना स्कोर मिलेगा. What measures have been undertaken by United Nations for its reform? ये तो आपके डायरेक्ट नोट से भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म इज अ क्लीशे क्वेश्चन, कितनी बार यूपीएससी ने रिपीट किया है. Discuss the 5 proposals made by India in recent COP26 conference held in Glasgow. ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर में कवर है, पंचामृत, राइट. ये मत मानिएगा कि अगर आपने उन 5 प्रपोजल्स को मेंशन कर दिया, ठीक है, तो जॉब इज डन. नहीं. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन PSIR ऑप्शनल पेपर 2. तो आपको क्या कहा, थियरी वाला ओरिएंटेशन लाना होगा. So when India is proposing, do you think India's proposal signify third world environmentalism? Do you see radical environmentalism here? तो वो जो अप्रोच है उसको आपको वीव करना होगा when you are presenting the proposals which India presented in COP26. Right? Now, second question. The post-colonial state was thought of an entity that stood outside and above society as an autonomous agency. तो आपको स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, बट व्हेन क्वेश्चन स्टेटमेंट सीम्स ट्रिकी, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू कि सबसे पहले तो क्वेश्चन डायरेक्टिव देखिए, एक्सप्लेन है. इट इज नॉट क्रिटिकली एनालाइज, इट इज एक्सप्लेन. यानी कि you need to break the question statement so that you can identify the about part of this question. If about part is clear, then you can develop the approach of this answer. About part. The post-colonial state was thought of an entity that stood outside and above society as an autonomous agency. यानी कि question statement is about post-colonial state's nature. Then later words are telling that it stands above and outside society as an autonomous agency. So this question statement is in light the difference between stature of state in West to the stature of state in post-colonial societies. In West, it is conceived that a state is an evolution from socio-economic changes which are observed in society. यानी कि society develop होती है, कुछ डिमांड्स डेवलप होती हैं, और उस डिमांड्स के आउटकम से वी फाइंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, तो यहां पर इसका अपोजिट है. यहां पर स्टेट इज देयर, बट स्टेट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द डेवलपमेंट और द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. Those who have gone through previous year questions, but those who have not, I am telling you, there is a question on a nation state and state nation. So यानी कि जो अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहां पर हम नेशन स्टेट का कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट. लेकिन अगर हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की बात करें तो यहां पर ऐसा एक इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टेट कम्स फर्स्ट. Actually, state came first, and then we saw were steps taken by state to integrate its policies with society. लेकिन अभी वो process चल रहा है, right? We have seen this in the work of different post-colonial scholars like F.W. Riggs, Gunnar Myrdal, right? तो यानी कि ये आपको यहाँ पर जो post-colonial state पे जो आपने scholars के views पढ़े हुए हैं, उन्हीं को use करना है. But to prove, yes, the statement seems correct, right? तो आई होप इससे आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई होगी, राइट. नाउ डिस्कस इमर्जेंस ऑफ न्यू रियलिज्म एंड इट्स बेसिक टेनेट. ये नोट्स से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है, यानी कि इसमें अप्लाइड वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर आप इमर्जेंस पढ़ते हैं न्यू रियलिज्म की from the fact when realism was questioned during the peace period between these two powers, USA and USSR, when you read about Kenneth Waltz, right, and then you read about the ideas which were propounded in neorealism, this structuralist idea different from reliance on, or you can say analysis on human nature, वो सब आपने जो पढ़ा है
उसी का इसमें यूज है, ठीक है, कि रियलिज्म इज अ टाइमलेस विजडम। इसके बाद व्हाट इज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट है, रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, knowing what are transnational actors is not enough to answer this second part of this question. Knowing transnational actors and they influence, right? For example, civil society groups, media, multinational corporations, right? And you also read about them in paper 2 section A, topic number 2, state in comparative perspective. लेकिन यहां पर आपको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से इस सेकंड पार्ट को डील करना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रांसनेशनल एक्टर्स की बात करते हैं, तो डू यू थिंक रियलिस्ट, लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम? आई होप आंसर वुड बी यस। तो अगर आंसर यस है तो यू शुड पुट इट देयर ना, राइट? सो नाउ आई थिंक अप्रोच इज क्लियर. Now, critically examine the decline of United States of America as a hegemon and its implication for the changing international political order. देखिए, question directive is critically examine the decline of United States of America as a hegemon. यानी कि क्वेश्चन में केवल ये नहीं आपको करना है कि yes, these are the factors due to which it seems like United Nations hegemony is on decline. नहीं, it is saying critically examine. Right? So you should put scholars there, you should put theory also. That is going to differentiate. इससे आपका जो आंसर है वो जनरल स्टडीज के आंसर के ट्रैप में नहीं आएगा, राइट? Then its implication for the changing international political order. और जब आप डिफरेंट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कॉलर से इसको एनालाइज कर रहे होंगे तो उसी से आपका लिंक हो जाएगा कि व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, राइट? जैसे रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, एंड व्हेन इट कम्स टू दिस Kaplan approach. So you have enough opportunity to put forward this system theory there, right? इसके बाद fourth question is the modernization thesis asserts the affluence breeds stable democracy. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच है उसी की स्टेटमेंट है ये. हाउ डू यू एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज एन एक्सेप्शनल केस? सो सेकेंड वाला जो पार्ट है वो सिग्निफाई क्या कर रहा है? वो कर रहा है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच सेज कि एज देयर विल बी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, so economic progress will create such kind of power centers within that particular state so that democracy is going to be the obvious phenomena, right? लेकिन अगर हम इंडिया का कंटेक्स्ट देखें तो इंडिया में इकोनॉमिक एफ्लुएंस हैज नॉट matured and has not developed at the rate which is found in different nations. लेकिन तब भी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, so we have achievements when it comes to providing a stable democracy. That's why this famous phrase is that India is like the island of democracy in South Asia. क्योंकि हमारे आसपास देखें तो there are various troubles in democracy, be it Myanmar, be it Sri Lanka, be it Pakistan, लेकिन हमने फिर भी इसको एक स्टेबल डेमोक्रेसी दी है. अब उसके रीजंस क्या हैं? तो अब when you have studied democracy and you have studied political modernization approach, bring an interlink to that. I hope you remember, scholar MacLeish said, democracy is not about the form of government. Democracy is also not just about the process to form a government. Democracy is more than that. Democracy is an act which we do every day. So the substantive idea of democracy and various factors, for example, political mobilization on the basis of different identities, which was supported by scholars like Yogendra Yadav, democratic upsurge, right? So this particular dimension need to be cleared. This particular answer with different question statement I have already covered in the enrichment course. देखिए
मेजर जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन थीम्स डिस्कस करे हैं, दीज वर द एक्सपेक्टेड वन। और एनरिचमेंट प्रोग्राम, एमएसपी प्रोग्राम, फाउंडेशन में हमने टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग द मेजर रोल, द मेजर ऑनर्स ऑफ सक्सेस इज ऑन द शोल्डर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही हैं जो एफर्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ दैट कंटेंट, राइट। टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स आपको समझा सकते हैं कि दिस इज द सिलेबस, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द कंटेंट। टीचर्स कैन ऑल्सो गाइड यू द वे टू आइडेंटिफाई कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम्स अराउंड विच यू शुड प्रिपेयर यू योर सेल्फ। Teachers can also tell you that this is how you need to structure an answer, but ultimately efforts are yours. So that is why all credit goes to students who are going to make distinct mark this year also. लेकिन इस अप्रोच से आपको अपनी तैयारी को एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। Those who have covered foundation course, now is the time to analyze previous year question papers, work on answer structures, get feedback, right? And every step counts. Now explain the success of ASEAN as a regional organization. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आसियान आप अलग से हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आप अपने नोट्स में देखेंगे तो सक्सेस ऑफ आसियान एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको अलग से अपने नोट्स में मिल जाएगा। तो आई वुड से दिस इज अ क्लीशे क्वेश्चन। एक्सप्लेन, क्योंकि इसका डिमांड तो डायरेक्ट आपको शो ही हो रहा होगा। Explain India's relation with European Union in context of Brexit. I hope you know that we had this India EU summit, and on which there were some broad pillars which were in news consistently, that what is the scope of, you can say, what India is looking up in EU integration, and how after Brexit, means earlier UK used to be considered as the India's door to EU, तो अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, और हम इसको प्लस कैसे बनाएंगे। तो ये भी नोट्स में भी डिस्कस हुआ, और ये आपके न्यूज़पेपर्स में भी था, राइट। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन डायरेक्टिव है एक्सप्लेन, तो इट इज़ वेरी मच डायरेक्ट इन नेचर, राइट। लेकिन फिर भी मेरा एक फोकस आपसे, एक पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स। यही डिफरेंशिएशन है आपका जीएस और यहाँ पर। मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ईयू एंड इंडिया, you should remember certain scholars, and your answer paragraph should be there with the views of different scholars, right? It is not just about opportunities. और एक बात और ध्यान रखिएगा, it is not just about the economic angle which was there. तो यानी कि आपको कुछ कीवर्ड भी दिमाग में रखने चाहिए कि इंडिया ईयू इंटीग्रेशन के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं इंडिया ईयू इंटीग्रेशन ऑन दीज पैरामीटर्स, व्हाट काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल फ्लक्स इट इज़ गोइंग टू जनरेट, राइट। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया ईयू समिट हुई तो केवल वहीं तक अपने आपको लिमिट नहीं करना है कि ठीक है दिस इज व्हाट हमें पॉइंट्स मिल गए। इसके अलावा ईयू पार्लियामेंट रिलीज्ड अ रिसर्च पेपर एंड they analyzed why EU countries were saw devastation in this first COVID wave. तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रायोरिटीज रखी हैं, they have seen that over dependence on China for medical supplies was one reason. Now they have prioritized that we have to have resilient supply chains. तो यानी कि EU की साइड से जो अदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और कैसे वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो पोस्चर है अभी along with to stop the assertiveness or to limit the assertiveness of China, be it in Indo-Pacific Quad, तो कहने का मतलब है वो जो जेलअप है वो आपके आंसर में शो होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। So it is not just about India EU recent developments, it is not about areas of cooperation, right? It is also about कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो from the standpoint of different scholars. What C. Raja Mohan is talking about on this, right? What Nirupama Rao is saying, what Shiv Shankar has recently put a comment on that, right? Now, section B.
Discuss the strategic implications of India's look east policy transforming to act east policy. तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस. क्या आपको एक सेग्रीगेशन आ रहा है कि अब द बॉडी पार्ट ऑफ आंसर कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू दीज डायमेंशंस, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस. और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस में एक और बात ध्यान रखिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंजेस आए, वो यहां पर इस क्वेश्चन ने आपसे डिमांड की है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी दैट इन लुक ईस्ट पॉलिसी द टारगेटेड एरिया हैज एक्सपेंडेड व्हेन इट कम्स टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी. अब हमने ज्यादा एरिया को कवर किया है, राइट? आपको नहीं लगता कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड द नीड फॉर looking at east and need for acting in east has actually having a significant difference? क्योंकि सबसे पहले लुक ईस्ट में हमारा प्रायोरिटी क्या थी कि हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देख रहे थे, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? लेकिन अब उससे अलग भी है. वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑल्सो. Earlier it was more formal, slow and sluggish in nature, but now we have seen many proactive steps in this direction, राइट? और एक और बात, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो ये सेग्रीगेशन तो रखना ही है, और कंक्लूजन में आपको इंडिया के रीसेंट किसी डिप्लोमेटिक पोस्चर को रखना है जिससे कि ये शो हो कि यस, ड्यू टू दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडियाज अप्रोच सीम्स टू बी मोर प्रोएक्टिव. All of you know that when it comes to Myanmar, it is like our window to ASEAN, right? And we know that Act East policy and ASEAN priority. And the last ASEAN summit, many ASEAN members were demanding India should have strong and clear diplomatic posture when it comes to developments in Myanmar. And India was well aware. From look east to act east, there are some common points which India is having in mind, that is stability in northeast. And for this, we need cooperation from Myanmarese army. You also know about Operation Sunrise, right? So India was having a strategic ambiguity in its diplomatic posture. But this was not accepted at all in the last ASEAN summit. तो अगर look east policy पर हम होते, तो slow and sluggish वाला जो word है वो justify होता. लेकिन इसके बाद हमने देखा कि इंडिया हैज categorically India has cleared that we need to have Myanmarese government, Myanmarese army need to have clear policy on stopping this violence and there should be reestablishment of democracy. तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो एक्ट पार्ट है वो उससे आपका आंसर कनेक्ट करेगा. इट्स नॉट अबाउट लुक, नाउ इट इज अबाउट एक्ट. समझ रहे हैं आप? सो आंसर में इवेल्युएटर को ये लगना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड द वेट ऑफ ईच कीवर्ड विच इज देयर इन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट. ठीक है? नाउ एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. यू हैव अ क्लियर सब टॉपिक इन पेपर 2 सेक्शन बी, राइट? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो डायरेक्ट ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन आप कवर करते हैं, वहीं से ये आंसर है. लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर 2 इज गिविंग यू स्कोप टू स्कोर हायर, राइट? तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आंसर को. क्या मैंने आपको बताया था? थियरी पार्ट. यूज थियरी हियर, राइट? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज हैविंग लिबरल एज वेल एज रियलिस्ट एज वेल एज न्यू रियलिस्ट टेंडेंसीज. आपके पास एनफ अपॉर्चुनिटी है कि हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज सीन ट्रांजिशन, having same philosophical foundation, but we have seen transition between Nehru to Indira also, right? तो वो contemporary connect करना है. contemporary connect फिर क्या करना है? recently our policy towards Indo-Pacific, right? having pragmatic approach, having this new realist approach, right? तो ये ओरिएंटेशन आपके इसमें दिखना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टिव एक्सप्लेन है तो आपने सोचा अच्छा एक्सप्लेन पूछा है, फिलोसफिकल फाउंडेशन, ओ 1 2 3 4 5 ठीक है, 6 7 ये फिलोसफिकल फाउंडेशन से हमने अपना कर दिया, अब इवेल्युएटर जाने उसका काम जाने. ऐसा नहीं है. एक एक मार्क्स की कीमत आपको जाननी होगी महेश बाबू, राइट? तो TSC ध्यान रखिएगा, ठीक है?
Then explain India's position on the waiver of intellectual property rights on COVID-19 vaccines in WTO. ये भी न्यूज़ में था. Again and again, मेंस प्रोग्राम की प्रिपरेशन के दौरान भी आई हैव स्ट्रेस्ड दैट ट्रिप्स India's position on in WTO on this TRIPS exception and our cooperation, from African nations, how it is unnecessary for African nation. तो this was very much in news. तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है. लेकिन अगेन आई एम सेइंग एक्सप्लेन कीवर्ड है, क्वेश्चन जीएस का नहीं है. तो इंडियाज पोजीशन ऑन वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये नहीं पूछा है कि इंडिया की पोजीशन क्या थी. इट्स नॉट व्हाट, इट इज एक्सप्लेन. तो अगर इंडिया ने ये पोजीशन ली, व्हाट डज इट सिग्निफाई? डू यू सी एनी स्कोप दैट इंडिया taking leadership in South-South cooperation? Do you see this position as a you can say dimension coming from this Emmanuel Wallerstein ideas also? क्योंकि हम वो हैं जो वेवर ले रहे हैं, हम वो नहीं है जो वेवर देने की तरफ हैं, right? Because where are these developments of these these COVID vaccines for which we were asking for waiver? West, right? North-South divide is clearly visible in COVID times also. So this kind of maturity about international development should be reflected in your answer. जितनी चीजें आपकी यहाँ क्लियर होंगी, उतना क्लियर आपका एक्सप्रेशन होगा. और अगर यहाँ चीजें केवल सरफेस अंडरस्टैंडिंग वाली होंगी कि अच्छा इंडिया ने ये किया था, ठीक है, ये हुआ था, नो, दिस वे यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द स्कोर ऑफ 300+ मार्क्स, क्योंकि ये तो डिमांड भी नहीं है. और हमारा इस वीडियो का पर्पस है डिमांड को जानना. राइट अबाउट ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड. आई वुड से अ डायरेक्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राइट. अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन बनता कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा. क्वाड ऑकस, यूपीएससी हैज आस्क्ड ऑकस इन योर जीएस पेपर, राइट. सो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, डिमांड आपको क्लियर हो रही होगी. ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड. ग्रोइंग सिग्निफिकेंस इज द वर्ड. क्या ग्रोइंग सिग्निफिकेंस का मतलब केवल इंडियन पर्सपेक्टिव से है? नहीं. तो ये गलती मत करना कि you just focus the major of your body part on India's perspective. You should think that this question is from Quad as a body. So you need to bring different perspectives on board. Right? Now, how does recent takeover of Afghanistan by Taliban impact India's strategic interests? How does recent takeover of Afghanistan? So, in this test series, so I made a question where the keywords which I used was geostrategic, geoeconomic, concerns of India after the recent debacles in Afghanistan. तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट था जो टेस्ट में पूछा था. तो वो जो डिस्कशन हमने वहाँ किया था, that is going to be used directly here, क्योंकि geostrategic, geoeconomic जो सिग्निफिकेंस है, क्या हैम्पर हुई है, उसी को आपको इसमें रिफ्लेक्ट करना है. Right? And you should have some scholars in mind. A point of caution for all of you at this point of time, when I was evaluating some of the test copies, so what I found that some students were using some statements from Professor Happyman Jacob, who is an expert on India-Pakistan relations. But it is not advisable to use any statement which you find by a scholar. Why I'm saying this? Specifically in international relations answer, your answer should reflect diverse opinions, but still, it should have orientation of alignment with India's view over that particular situation. आपको ऐसे स्कोर अच्छे समझ में आ जाएगा. In that statement, Happyman Jacob was saying that India has lost the battle. India is on the periphery. Gains of 2 decades are lost. तो वो जो पर्सपेक्टिव है वो एक स्कॉलर का पर्सपेक्टिव है. He's a professor, he's a scholar. It is his duty to bring his ideas on the table in his work.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एज इट इज की मतलब यू कैन से यू पुट इट एज अ पाइवटल व्यू ऑफ योर आंसर, ऐसा नहीं करना है, राइट? सो योर एंगल ऑफ योर कंक्लूजन शुड बी pragmatic, practical होना चाहिए, but optimistic and aligned with India's view of that particular situation. तभी तो difference है that you have to become part of the system. You have to become bureaucrat, right? अगर आपको journalist बनना है, activist बनना है, तो लिखिए दुनिया जहान की चीजें, लेकिन यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक रखना पड़ेगा अपनी अप्रोच को, ठीक है? तो वहां पर ऑप्टिमिस्टिक आपको दिखना पड़ेगा, स्कॉलर्स का यूज करिए, लेकिन ऐसी एक एंटी स्टेटमेंट पे, एकदम एंटी नहीं, एंटी इन द सेंस कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसके बिल्कुल अपोजिट ये स्टेटमेंट खड़ी हुई थी, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? सो यहां पर आपका सेग्रीगेशन होना चाहिए पॉइंट्स का, राइट? इन द लाइक कि चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ट्राइलेटरल जो अलायंस प्रोबेबल बोली जा रही थी, तो उससे इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे हैम्पर होगा, ट्रेड का कैसे इम्पैक्ट हैम्पर होगा, ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट होगा, देन इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया, आर इन्वेस्टमेंट इन छाबार, राइट, देलाराम, जरंज, all of this need to be mentioned. But as I told you, answers in IR part here in PSIR paper 2 should not be just about facts, developments. It should have this argument of scholars, right? Now, non-alignment was little more than a rational strategy on part of materially weak India to maximize its interest with bipolar distribution of global power. Comment. So question is from non-alignment, right? Comment about part is non-alignment. But the question statement is signifying is little more than rational strategy. ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नैम पर, उनको याद रहता है कि अच्छा on NAM we know what C. Rajamohan was saying, that NAM is in coma, right? लेकिन कमेंट है तो ठीक है, आप बैलेंस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, लेकिन सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना होगा हाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एप्ट, राइट? इज इट्स करेक्ट मोर देन अ रेशनल स्ट्रेटजी ऑन पार्ट ऑफ मेटेरियली वीक इंडिया. तो उस टाइम पर इंडिया वाज मेटेरियली वीक, सो इट वाज मोर देन अ रेशनल स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज इंटरेस्ट इन बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन. तो उस टाइम पर हमारा जो रेशनल था वो क्या था, राइट? एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट that we have to keep aside. Means आपको लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू नेहरू का, साथ में नेहरू की सारे पॉइंट, जो नेहरू's contribution to India's foreign policy in its emerging years was not just from liberal aspect. You should talk about some of the stands which India took at that point of time, which show neo-realist perspective, right? And how by NAM we were advancing these neo-realist perspective. Means by we were getting this opportunity to gain leadership of recently decolonized world, right? And by this we can forge coalitions by which we can serve our interest, और जो कि आपका realist perspective में show होता है. So that orientation should be reflected along with the examples of that particular chapter. तो ये हमने नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है. यहाँ पर टाइम की कमी के कारण पर्पस केवल क्या है कि आपको क्वेश्चन की डिमांड पता लगनी चाहिए. तो आई होप क्वेश्चन की डिमांड आपको पता लग गई होगी, ठीक है? Examine the geostrategic points of contention in the bilateral relationship between India and China. A cliche question, you know that one question in India-China is expected, right? Every year. अब यहाँ पर geostrategic points of contention है, ठीक है? तो you need to categorize your answer, right? Be it border issues, be it connectivity, be it our approach towards European Union, our approach towards this Africa. लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको कहा, पेपर 2 है, थियरी स्कॉलर्स. तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एंड कनेक्टिविटी एज अ वे टू रिजॉल्व इश्यूज एंड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, दिस इज व्हाट चाइना सेज इन इट्स BRI initiatives, OBOR, right? Silk Maritime Route. और इस पर इंडिया
का क्या पर्सपेक्टिव है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थियरी itself which we have covered in paper 2 section A? So brief linkage would actually help you differentiate your answer, right, from this rudimentary categorization of the issues which are there between India and China. क्योंकि question is not explain, question is examine. So there's a difference between explain and examine. समझ में आ रही बात? Now write a brief analysis of the ethnic conflicts, cross-border migration along India-Myanmar, India-Bangladesh borders. Again, this particular question statement was in news, covered in our tests, foundation discussion. Rohingya issue, ethnic mobilization, issue to radicalization, right? Threat to, important pillar of security metrics, right? So I would say a direct question, right, but having right approach, understanding the demand, analysis of ethnic conflict and cross-border migration. This is the focus. ठीक है? इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इंडिया म्यांमार दोनों में कॉमनैलिटी है, दोनों के साथ हमारा एक ही इशू है, राइट? एंड वी नो दैट the troubles which we have seen in the past in northeast is related to cross-border migration and ethnic conflict, right? तो पूरा जो डिस्कशन डिबेट है हमारी, उसी के बेसिस पर आपको एनालिसिस प्रेजेंट करना है। तभी वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लिखकर बहुत आए हैं। खैर, now why South Asia is considered as the world's politically and economically least integrated region? This particular dimension we have discussed इन सार्क। जब हम सार्क की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने इसका डिस्कशन किया था अलॉन्ग विद डेटा स्कॉलर्स, राइट? सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ डू द constituent states influence the foreign policy making process in India? I hope you remember the discussion we had on para diplomacy, subnational diplomacy, and आप एक बात ध्यान रखिए, हाउ डू द constituent states influence foreign policy making in India? तो जनरली होता क्या है कि एक पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स को याद रहता है सब नेशनल डिप्लोमेसी, एंड इट इज सीन इन नेगेटिव लाइट ड्यू टू, लाइक वी हैव सीन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस एंड रोल ऑफ AIDMK तमिलनाडु, एंड व्हेन इट कम्स टू तीस्ता इंडिया बांग्लादेश एंड रोल ऑफ TMC वेस्ट बंगाल. बट देयर इज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देयर आल्सो which we discuss in para diplomacy, how foreign policy should not be conceptualized as the prime, you can say, duty of a national government at the center, but there should be involvement of constituent units, even local governments also. I mean, this is the the basic idea of para diplomacy, to make the to make the diplomacy more mature and more, you can say, more realistic, connecting to the actual demand of the ground. Now, examine the evolution of India's role in global nuclear order. Again, a direct question. ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में इस पर्टिकुलर थीम पे क्वेश्चन आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज डिस्कशन, फाउंडेशन डिस्कशन, टेस्ट सीरीज डिस्कशन, हर जगह ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तभी मैं कह रहा था कि अराउंड 40% क्वेश्चंस कैन बी हैंडल्ड इजीली इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, नॉट इन रैंडम मैनर की ठीक है हमने प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चंस कर लिए, नहीं। आई एम सेइंग with every topic, themes. So first step is you know the topics. Second step is you know the most repeated themes from these particular topics. And third step is you have gone through the questions which are asked. ठीक है? And फिर उसके बाद step है कि अब आपने उसमें से questions को practice किया है and you have got the feedback and you have improved. ठीक है? ये simple structure आपको follow करना है and it is 100% surety that you are going to score गुड मार्क्स, आई वुड से। क्योंकि 300 प्लस कौन स्कोर करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं। सो वो बता पाएंगे लेकिन तब व्हेन वी हैव एक्चुअल आइडिया कि आपका अभी क्या स्टेटस चल रहा है PSIR ऑप्शनल में, एंड अक्रॉस द सिलेबस व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर मेकिंग देयर। खैर,
Relations between India and Russia are rooted in history, mutual trust, mutually beneficial cooperation. Discuss another direct question. क्वेश्चन स्टेटमेंट से आपको इसकी डिमांड पता लग गई होगी. हिस्ट्री, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन, 3 कीवर्ड्स हैं अराउंड विच यू हैव टू वीव द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर. डिस्कस द एसडीजी एज सेट बाय यूनाइटेड नेशंस. ये वो क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी ने आपको दिया है कि भाई इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है और आंसर्स भी प्रैक्टिस किए होंगे क्योंकि ये रिपीटेड थीम्स हैं. आइडेंटिफाई ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका. अफ्रीका पर यूपीएससी ने जीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, राइट. अफ्रीका में यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है और अफ्रीका पर पहले भी पूछा जा चुका है और कितनी बार डिस्कस भी हो चुका है. यानी कि जब ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंटरेस्ट, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट अफ्रीका इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली ऑन AAGC, how India is having potential to replace this debt trap diplomacy, check back diplomacy of China, this neo-colonialism of China. Or beauty, you can actually bring beauty in your answer by giving it a contemporary connect. For example, we have seen that there is a debacle which we have read when it comes to China's policy in Uganda, right? And in December, in a speech made by Xi Jinping, he has said that now China is going to focus on medium-scale loans, small loans, by which he meant that now China is going to shift its policy from giving long-term and large-scale loans to these large-scale infrastructure projects to those kind of loans which are based on skill development and you can say middle range projects. तो क्या चाइना में ये जो शिफ्ट देखा जा रहा है, तो क्या इसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा? क्या इंडिया को इसकी एक एडवांटेज मिल सकती है? क्या ये एक इंडिया का, अफ्रीका हैज बीन अ ड्राइवर, राइट. वी नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट इन अफ्रीका. तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे में जो रीसेंट अभी चेंजेस देखने के लिए मिले चाइना में, तो क्या इंडिया को उससे क्या एडवांटेज मिलेगी? और यहाँ पर आप मिस्टर श्रृंखला के भी कमेंट को यूज कर सकते हैं दैट इंडिया एंड अफ्रीका हैज लॉट इन कॉमन. बोथ कम्युनिटीज हैव गिवन प्राइमेसी टू कॉमन वैल्यूज, राइट. एंड द कम्युनिटीज विद कॉमन वैल्यूज आर एबल टू फाइंड strategic balance more easier than the short-term economic goals which have seen by many European and even imperialist China. तो ये जो statements हैं, ये जो analysis हैं, they should be embedded when you talk about India's, drivers of India and Africa. So I hope इस discussion से आपको clarity मिली होगी. And tune in to the Edukemy YouTube channel. Shashank Tyagi signing off. Take care. Keep learning. Keep growing.